let us study about classification by Aristotle. So biological classification goes back to Aristotle in Greek times. These were basically termed as the artificial classification. So Aristotle basically classified organisms on the basis of their nature, that is, they categorized them according to their living environment, that whether they are aquatic or whether they are terrestrial. But this classification given by Aristotle have certain drawbacks. For example, plants and animals are found both in sea as well as on land. So it is not giving a clear description that how to categorize plants and animals as aquatic or terrestrial. Also, there are very small animals that are termed as microorganisms. So it was not a good basis of classification because it was not easy to categorize the microorganisms, that whether they should be placed in terrestrial habitat or aquatic habitat, because microorganisms are found both in aquatic and the terrestrial habitat. So this drawback is seen in the classification given by Aristotle. Further, the basis of classification, that what are other bases of classifying organisms. So the first is presence or absence of nucleus in cells. We know that nucleus is basically considered as the brain of the cell, and it is the major part that plays a vital role in the cell. So the first classification was given that whether the nucleus is present in the cell or whether it is absent in the cell. On this basis, the cells are classified as prokaryotic cells and eukaryotic cells. Cells having a definite nucleus, that means they are having a proper nucleus, having a nuclear membrane, these cells were termed as the prokaryotic cells. On the other hand, the cells with a definite nucleus are termed as the eukaryotic cells. Next is the basis of classification. Next was formed by the number of cells in an organisms. Number of cells, कितना count है cells का, उस basis पे organisms को classify किया गया. So the first was unicellular. Uni, that means one. Single celled organisms, जो भी एक ही सेल से जिनकी बॉडी बनी हुई है, फॉर एग्जाम्पल एमीबिया, पेरेमीशियम, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है दे आर टर्म्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. एंड ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स जिनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट है, सो दीज आर टर्म्ड एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. सो दिस इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द नंबर ऑफ सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. That means कि how an organism is getting its nutrients, अपना food वो किस way से जो है ले रहे हैं, that is from the next basis of classification. So on the basis of mode of nutrition, the organisms are classified into two categories, that is autotrophs and heterotrophs. Autotrophs, that is self-feeders, means that produce food on their own, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स. द अनदर कैटेगरी इज हेटेरोट्रॉफ्स. ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड. सो हेटेरोट्रॉफ्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड. नेक्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन बॉडी, कि कितना कॉम्प्लेक्स जो है उनकी बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या कितना सिंपल है. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच आर स्मॉल, मल्टीसेलुलर दैट मीन्स उनकी बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो ज्यादा हैं, बट उनकी बॉडी का साइज क्या है, स्मॉल है, लाइक हाइड्रा. पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स आर असाइंड अ पर्टिकुलर फंक्शन. इनकी बॉडी में पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन जो है असाइन किया होता है. नेक्स्ट इज इन लार्ज ऑर्गेनिजम्स. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही हैं बट नाउ दे आर लार्ज ऑर्गेनिजम्स. सो इन लार्ज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स टिश्यूज ग्रुप फॉर्म एन ऑर्गन. टिश्यूज जो हैं, टिश्यूज जो हैं वो एक ऑर्गन बनाते हैं, जो कि ऑर्गन्स जो हैं फिर फर्दर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो एक साथ वर्क करते हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. सो दिस इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन.